burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I've weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling. So are you guys all over here for web development? Like, which is the field you are most interested in? And may I have anything about you? How are you? And are you all enjoying the session, first of all? As we have already completed 2 days, do you want to tell anything to us, to the speakers, to the hosters, to the team? Do you want to convey anything? Do you want any kind of content in for future? We will look forward to it. Just please make the session interactive. It's a request to you all because one side interaction is just something talking to the screen.
Okay, so I hope we all are ready to get started. So let me start this third day for the development week with a motivational quote I just recently got my mind on. Get going, move forward, aim high, plan a takeoff. Don't just sit on the runway and hope someone will come along and push you to the airplane. Change your attitude and gain some altitude. So, here all, I am welcoming you to the third day of the development week. Today, we are going to have our React.js bootcamp with Mr. Rishabh Sharma. He is the lead front-end developer at Black Greens. He is also an educator at Geeks. Adding more, he was an ex-product engineer and an educator at Prep Coding. We will be shortly joining him for the session. So, moreover, let me tell you something that tomorrow we will be winding up with this development week, and we are going to we are going to handle you over the projects, which is the main attention for this week. You will be having your project day with Mr. Tushar Patodia from 7 p.m. onwards tomorrow. And I hope you all are enjoying. And please make the session interactive for as the skills you are going to develop over here will really help you in the development, in the web development part. Now I will hand over to KK. KK, please proceed with the session. Yeah, thank you, Rupashi. So, everyone, KK here again. Yeah, so we have done HTML, CSS, and JavaScript. Everything is done. What is left? React.js. Thus, you made a structure of your website, done the styling, check the logical behavior of your website. What is left now? What is React.js? React.js is a JavaScript library by which we can make fast and interactive user interfaces developed by Facebook in 2011. After seeing the excitement of you people, I would not waste any time and request our Vice Chairperson, Mr. Utkarsh Jha, to welcome our today's speaker. Over to you, sir. Good evening, Utkarsh. Good evening, everyone. Good evening, sir. Okay, so is it compulsory to turn on the camera? Okay, so let me then. Because without cam, the session won't get interactive, right? Okay, okay. So, guys, first of all, yeah, please make this thing very clear in your mind that बोल लो यार. Please speak. Anyone who could unmute themselves, like, and like anyone Guys, please anyone interact. who could volunteer. यार कोई तो बात कर लो, ऐसे सेशन में मजा नहीं आएगा. Good Yes, evening, sir. sir. Good evening, sir. Guys, good evening. So, like, I don't know earlier how your sessions were going. Right. But in my session, I would request all of you to please feel free to unmute yourselves, ask your doubts, right, regarding the industry, regarding React, regarding development, anything. If you have any doubts, please feel free to ask any of the doubts, right? So, anyone who could tell me कि यार React हम क्यों use करते हैं? Why we use React? Anyone? सर बेसिकली रिएक्ट जो हम यूज़ करते हैं वो ठीक है. इसलिए करते हैं यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए ताकि पेज रिलोड ना हो एंड द यूज़र कैन एक्सपीरियंस वेरी मच लाइक उसको अच्छी फीलिंग आए या पेज को यूज़ करने में एक वेबसाइट यूज़ करने में ज़्यादा उसका टाइम वेस्ट ना हो चीज़ें लोड होने में. ठीक है. Anything else if someone wants to add something? ठीक है. So, let me just tell you one thing that when it comes to browser, right? Browser is a thing. जिसको सिर्फ 3 चीजें पता है: HTML, CSS, and JavaScript. Nothing else, right? The browser knows 3 things: HTML, CSS, and JavaScript. Right? Doesn't matter whatever you are writing the code in, be it be your React, Next, Vue, Angular, anything.
right? Browser don't know what is React, browser don't know what is Angular, browser don't know what is your view and all those stuff, right? All browser know is HTML, CSS, and JavaScript. In fact, browser don't know what is Bootstrap itself. Right? All these things are built on the top of either on JavaScript or on CSS. Agreed? Yes, sir. Yes, Hello, sir. Loki. Yes. So now why do we React? Why do we need React? क्या हमारा काम JavaScript से नहीं हो जाता? One question. क्या क्या JavaScript से मैं वो सारे काम नहीं कर सकता जो मैं React से कर सकता हूँ? Yes or no? Yes. I can do all those work which I am doing with React, I can easily do those work with the help of JavaScript only. Then why? Why I am not doing it with JavaScript and why I am doing it with React? Anyone who could tell me? I think it is easy to, yeah, of course. Exactly. React, Angular, Vue, Next, Nest, 3.js, all these things are for the ease of developer. See, if we want to build a single page application, that is SPA, we can build it by using plain JS, by using vanilla JS, right? But it's a bit overhead. बहुत ज्यादा हमें line of code लिखना पड़ेगा, and to reduce that line of code, to ease our coding, to ease whatever we are doing, these libraries and frameworks came into picture, and React is one of those. इतना clear है, right? Now, it comes why React is so famous. Anyone? There are other frameworks and libraries in the market. Why one is preferring React? Anyone who could tell me why? कोई तो बता दो. अरे यार unmute करके बता दो. Not in the chat. Like I'm giving you free options to unmute yourselves. कोई दिक्कत नहीं. बोलो. No idea. Anybody else? No idea. अरे chat में क्यों बोल रहे हो यार? Unmute कर लो ना. ऑप्शन दे तो रहा हूँ unmute करने का. सर क्लाइंट साइड और जो सर्वर साइड है, दोनों तरीके से उसको दोनों साइड से यूज कर सकते हैं, तो उसकी वजह से स्पीड एनहांस हो जाती है. Speed हो जाती है. Right, exactly. That is one of the reasons React follow component based approach. Exactly. Now, when it comes to React, your React applications are really very fast. बहुत fast होते हैं React applications when it comes to loading, optimizing the things. Now, क्यों? ये सब क्यों होता है? Because React has some bundlers in it. Anybody who is aware of bundlers must have heard about the term Webpack, White, Parcel, right? पढ़ा है? किसी ने anybody किसी ने पढ़ा हो इसके बारे में? Yes. So bundlers होते हैं React के behind the scenes काम करते हैं. अब bundlers क्या काम करते हैं? कैसे React एप्लीकेशन को फास्ट बनाते हैं? Bundlers क्या करते हैं? अब देखो, जैसे हम लोग कोई भी कोड लिखते हैं, so we write multiple lines, multiple files, I can say, right? हम लोग multiple files लिखते हैं, index.js, then page2.js, page3.js, we write multiple files. Now, जब हमें अपना कोड प्रोडक्शन पे अपलोड करना होता है, वी क्रिएट अ बिल्ड ऑफ आवर कोड, राइट? हम लोग क्या करते हैं? एक बिल्ड बनाते हैं. अगर किसी ने वो बिल्ड बनाया है एंड किसी ने उस बिल्ड को एग्जामिन किया है, तो ऑल द कोड दैट वी राइट इन मल्टीपल फाइल्स, वो सारा कोड कंबाइन होके गेट्स इनटू वन सिंगल जावास्क्रिप्ट. एंड डजंट मैटर तुम अपना कोड JSX में लिखते हो या JS में लिखते हो, doesn't matter at all. At the end, it will get combined into one JS file. And that's why I say browser only understands JavaScript and not any other thing. Because तुम कुछ भी करो, if you are writing Bootstrap as your CSS, when you create a build, it will create one CSS file जिसमें वो सारी Bootstrap की properties add होगी. Bootstrap itself is CSS, right? हाँ जतिन भाई बोलो.
कोई डाउट है क्या? नहीं, फाइन, ठीक है. बूटस्ट्रैप नो डाउट इज अ लाइब्रेरी, बट इट इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ CSS. Yes, so that's it. Now someone said component based approach. Now what is a component based approach? Anyone who could tell me what is component based approach? Tushar, would you like to answer it? No thanks. Okay. So let me tell you what is a component based approach. Maybe let me share my screen first. Is my screen shared to you guys? Yes. Is Notepad visible to everyone? Yes, it's visible. Okay. Let me just explain it to you once. If Notepad is visible. So, visible, na? Notepad is visible, right? Okay. Yes, sir. Fine. So, we have this is our screen, right? जिस पे हमारा वेबसाइट खुला हुआ है. अब वेबसाइट पे यूजुअली क्या होता है? वी हैव अ nav bar kind of thing, जहां पे यहाँ पे हमारा एक कोई लोगो होता है, एंड यहाँ पे वी हैव अ आई कैन से nav bar. ऐसा कुछ होता है. एंड उस nav bar के नीचे माइट बी अ चांस कि यहाँ पे हमारे पास कुछ कंटेंट हो, राइट? एंड यहाँ पे वी हैव few more content in our application. हो सकता है दिस माइट बी अ चांस विद इन वेब एप, राइट? अब इस वाले कंटेंट के अंदर भी हो सकता है यहाँ पे कोई मेरे पास दो बटन हो, एंड यहाँ पे वी हैव अ फॉर्म, राइट? वी हैव अ फॉर्म हियर. सो what are these? This is a complete website. This is a complete website. And if we break down this website, if we break down this application, so these are the components. The nav bar क्या है? This nav bar will act as a component 1. This logo will act as a component 2. This complete will act as a component 3. Inside this component, this is component 3.1. This is my component 3.2. This is my component 3.3. Might be a chance इसके अंदर भी we have further components, right? And this is my component 4. This is my component 5. And this is my component 6. So my complete web app, my complete web application is being divided into different components. Is this thing clear? Guys, this is clear? Okay, Yes, Yes, sir, sir. it is. okay, wait. So does JavaScript covered in the Java, like TypeScript is converted into JavaScript? Okay, just JavaScript gets converted into Java. No, JavaScript is not converted into Java. JavaScript itself is a language. JavaScript itself is a language, right? And trust me, JavaScript is really very good language. Right? It is most interesting language I have ever gone through. JavaScript. If you know JavaScript, then you can master the world. I can say JavaScript is so beautiful. It is so beautiful. It is so beautiful, right? Trust me. Okay. Now all the components combine together to make a website. Now, how these components are beneficial for us? Let me tell you one single definition of a component. Components are nothing but, let me write here, components are functions. Like normal functions. Anyone who could tell me what are functions? Anyone who could tell me what are functions? यार functions क्या होते हैं ये तो बता दो, ये तो पता होंगे. चैट में लिखने का टाइम नहीं है यार. सेक्शन ऑफ कोड जो कि हम रिकर्सिवली यूज करना चाहते हैं तो हम एक जगह लिख लेते हैं, फिर जब हमको जरूरत होती है तो हम उसको कॉल करते हैं. रिकर्सिवली यूज करने के लिए फाइन. एंड
और क्या कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं फंक्शंस की. एग्जैक्टली एंड मेन ब्रांच पे ज्यादा लोड ना पड़े इसलिए भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. सो व्हाट कैन आई राइट हियर, मेन पे लोड ना पड़े, मे बी मेन पे लोड ना पड़े, ऐसे लिख लेते, कोई नहीं. दैट राइट. व्हाट एल्स अ फंक्शन कैन डू? परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. यस, परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. Perform specific task. What else? What else a function can do? Come on, guys. Function. We can reuse a function. We can call a function. It is there to perform some specific task ताकि हमारे main page पे कोई load ना पड़े. और क्या हमारे से error handling easy हो जाएगी? Error handling, right? So all these are the advantages of using a component. A function in any other file, in any other language, I can say. A function in any other language is equivalent to a component in a React. Rather, I would say a component in React is equivalent to a function in any other language. So, इसका मतलब, तो क्या सर हम कंपोनेंट को रीयूज कर सकते हैं? यस, हम कंपोनेंट्स को रीयूज कर सकते हैं. तो क्या सर हम कंपोनेंट को कॉल कर सकते हैं? जी हाँ, हम बिल्कुल कंपोनेंट को कॉल करेंगे. राइट, वी विल कॉल अ कंपोनेंट. जैसे हम फंक्शंस को कॉल करते टाइम आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स पास करते हैं, तो क्या हम कंपोनेंट्स में भी आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स पास कर सकते हैं? यस, वी कैन डू दिस थिंग एज वेल. Functions are there to perform some specific task. तो क्या components भी इसलिए होते हैं? Yes, components are also there to perform some specific task. Each and everything, not even a single thing is there that a function can do and a component cannot do. But yes, there are certain things that a component can do but a function cannot. So, if I define a component in one single line, I would say components are nothing but functions with some special superpowers. Clear है? यहां तक components क्या है, क्यों यूज होते हैं, how you will define a component. Yes? Yes, Yes, sir. sir. Yes. So let's move further. So let's create a component. Let's create a component itself. Right? Let's create it. My VS is visible, right? Yes, sir, it is. Okay, good. So this is the folder structure of React. Right? Again, I'm not going deep how it is created, and because it's like a theory of, I can say, 10 days. I mean 10 classes, I can say. So वहाँ पे नहीं जा रहा, but yes, it is a basic structure of a React app, which contains some node modules. Right? Node modules are nothing but the dependencies which React need to run on your browser. That's it. That's my node module, right? In public folder, we have this index.html file. Now, as I told you, the first file which gets loaded to our browser is HTML file. Agreed? Yes, sir. Yes. So now what happened, in my HTML file, I have created a div whose ID is root. And this is the only HTML code. Let me remove this comments as well. Let me remove this comments from here. And anybody who have worked on React before, anybody who is working or who has already worked on React, anyone? Yeah. Maybe नहीं. चलो ठीक है. So let me tell you that this is the only HTML code that you will find in a React app. इसके अलावा तुम्हें HTML कोड नहीं मिलेगा पूरी React app में. And I mean it. नहीं मिलेगा. इसके अलावा तुम्हें HTML कोड मिलेगा ही नहीं. Yes, in complete React app, we would be writing HTML like syntax. Mark my words. These are important words. The only HTML file, the only HTML that we use in a React app is this. These 17 lines, I can say.
This is the only HTML code that we would be using in a React app. Else everything that we would be using might be a chance it would be a HTML like syntax, but it will not a HTML code. I will prove it to you. And that would be my JSX. So, sir, it's like an entry point. Yes, exactly. This is the entry point of a React app. Dev with the ID root. Now, what will happen whenever my website, my web app will get load on the browser? A DOM tree will get created, and a DOM tree is created using this HTML only. राइट एक डॉम ट्री कैसे बनता है यार डॉम ट्री कैसे बनता है एक एचटीएमएल का यूज करके ही तो एक डॉम ट्री बनता है ना बिना एचटीएमएल के डॉम ट्री नहीं बन सकता राइट सो हमने क्या किया हमने सिर्फ एक डॉम स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए ताकि हमारे ब्राउजर पे एक डॉम क्रिएट हो जाए एक डॉम क्रिएट हो जाए उसके लिए मैंने क्या किया उसके लिए जितनी एचटीएमएल रिक्वायर्ड थी मैंने इसको दे दी यार इतनी ही एचटीएमएल रिक्वायर्ड है वैसे ज्यादा नहीं रिक्वायर्ड मेरे को फाइन अब इसके बाद मैंने इस रूट का यूज किया हुआ है अपने यहां पे index.html पे देखो अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं मैंने एक रूट एलिमेंट किया जहां पे मैं क्या कर रहा हूं document.get element by id रूट तो सिंस हमने कल जावास्क्रिप्ट का बूट कैंप किया है सर कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज डॉम ट्री ओके सो आई डोंट थिंक सो फिर आज मैं प्रोजेक्ट करा पाऊंगा जो प्रोजेक्ट मुझे कराना था लेट्स एक्सप्लेन द बेसिक ऑफ रिएक्ट राइट एनीवन जिसको लगता हो कि वो रिएक्ट पढ़ के आया हुआ है ऑलरेडी उसको बेसिक्स आते हैं तो ओके नोट लाइक दिस मे बी नोट लाइक दिस लेट मी शो यू हियर कहाँ गया हाँ ये रहा ओके ठीक है फाइन let us erase this all मुझे इसकी जरूरत नहीं है ठीक है so see what is this is my HTML code yes or no is this thing clear that this is my HTML code is it Yes, sir. yes now what will happen see जब ये कोड पेज पे लोड होगा तो सबसे पहले क्या होगा सबसे पहले इसको मिलेगा doc type which is my HTML उसके बाद इसको मिलेगा एक HTML टैग HTML टैग के अंदर क्या है HTML टैग के अंदर we have a head tag राइट एक हेड टैग है उस हेड टैग के अंदर क्या है टाइटल टैग राइट वी हैव टाइटल टैग एंड HTML के अंदर एक और टैग भी तो है बॉडी टैग उस बॉडी टैग के अंदर क्या है वी हैव अ div टैग उस div टैग के अंदर क्या है उस div टैग के अंदर वी हैव अ पैराग्राफ टैग राइट अब इस पैराग्राफ के अंदर क्या होगा देयर मस्ट बी सम टेक्स्ट इन दिस पैराग्राफ एंड इसका सिबलिंग क्या है इसका सिबलिंग एक है h1 टैग जिसके अंदर भी मेरे पास कोई ना कोई टेक्स्ट पड़ा होगा राइट is this the same syntax which I have like shown here right it is the same syntax I can say it like right Yes, sir. so ये क्या है यार if I define a code a code is nothing I'm like saying a very big sentence very used sentence like understand it very carefully कोड कुछ भी नहीं है कोड इज ओनली अ इंग्लिश लैंग्वेज ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज है एक कोड क्या है एक इंग्लिश लैंग्वेज है विद सम ग्रामर ऑफ HTML अगर मैं इस पर्टिकुलर कोड की बात करूं हेड क्या है यार हेड इज अ इंग्लिश लेटर हेड इज अ इंग्लिश अल्फाबेट राइट अल्फाबेट कह रहा हूं इंग्लिश वर्ड राइट हेड इज अ इंग्लिश वर्ड टाइटल इज अ इंग्लिश वर्ड बॉडी इज अ इंग्लिश वर्ड रिएक्ट इज अ इंग्लिश
इन सारे इंग्लिश वर्ड्स को अगर मैं HTML की ग्रामर के तरीके से लिख दूं तो क्या वो HTML का कोड बन जाएगा? राइट? Yes, sir. Yes, Likewise. sir. Okay, understand it very carefully. एक एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से समझना इस चीज को. मैं क्या करता हूं? आई यूज टू राइट एप्लीकेशंस, राइट? मैं एप्लीकेशंस लिखता हूं. अब एप्लीकेशन किस किस टाइप की हो सकती है? लीव एप्लीकेशन हो सकती है, इंक्रीमेंटल एप्लीकेशन हो सकती है, मतलब सैलरी इंक्रीमेंटेशन की एप्लीकेशन हो सकती है, राइट? और मे बी कोई और एप्लीकेशन हो सकती है, राइट? इनकम टैक्स माफ करने की एप्लीकेशन हो सकती है, राइट? या फिर तुम्हारी भाषा में बोल देते हैं, लाइक तुम्हारी भाषा में लव लेटर हो सकता है, राइट? व्हाट इज इट? व्हाट इज इट? नाम ही तो अलग है बस. जो हम लेटर्स लिख रहे हैं, अगर मैं छुट्टी के लिए लिख रहा हूं तो लीव एप्लीकेशन बन गई. इनकम टैक्स के लिए लिख रहा हूं तो इनकम की एप्लीकेशन बन गई. गर्लफ्रेंड को लिख रहा हूं, लव लेटर बन गया. नाम ही तो अलग है. अंदर तो मैंने इंग्लिश ही लिखी हुई है ना यार. अंदर क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश ही लिखी हुई है ना. यस. लाइकवाइज अगर मैं एक कुछ इंग्लिश लिखता हूं, मैंने कोई इंग्लिश लिखी और उसकी ग्रामर मैंने सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखी, तो वो मेरी सी का कोड बन जाएगा. अगर कोई इंग्लिश लिखी, उसका सिंटैक्स, उसका ग्रामर पाइथन के जैसा है, तो वो पाइथन का कोड बन जाएगा. इस इंग्लिश का सिंटैक्स HTML के जैसा है, तो ये क्या बन गया? HTML का कोड बन गया. बट एट द एंड ऑफ द डे अ कोड इज नथिंग बट अ English collection of English letters which are written according to a grammar of a particular language. एक कोड की डेफिनेशन समझ में आई? कोड क्या होता है? So this is my HTML कोड. ये मेरा एक HTML कोड है. जब ये कोड मेरा ब्राउजर पे माउंट होता है, जब ये कोड ब्राउजर पे चढ़ता है, तो जो ऐसा एक फाइल का स्ट्रक्चर, जो ऐसा एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, दिस इज माय डॉम एलिमेंट. ये क्या है? मेरा एक डॉम एलिमेंट है. दिस इज नॉट डॉम. नो, this is not DOM. This is just a simple HTML file. When this HTML gets rendered on the browser and browser creates this like structure, this structure is known as the DOM tree. Document Object Model. क्या अब समझ में आया DOM क्या होता है? रोकी, is it clear now? रोकी, yes. Anybody, any doubt in DOM structure? नहीं है किसी को भी? डॉम क्या होता है? डॉम क्लियर है? राइट. आगे बढ़े. चलो फिर डन. अगर डॉम क्लियर है तो लेट्स मूव फर्दर. ओके, सो मैंने क्या किया? मैंने एक एंट्री पॉइंट डिफाइन किया था विच वाज माय दिस div. ये div था मेरा एक एंट्री पॉइंट. इस div को मैं गेट करके लेके आया कहां पे? index.html. अब जब मैं इस div को गेट करके लेके आया, राइट, ये एंट्री पॉइंट किसका था? ये एंट्री पॉइंट था ताकि मैं ब्राउजर से अपने कोड में एंटर कर पाऊं, राइट? मैं ब्राउजर से तो अपने कोड में एंटर किसके थ्रू कर सकता हूं? ओनली बाय यूजिंग HTML. तो अब मैं ब्राउजर से तो अपने कोड में एंटर कर दिया, पर मेरे कोड में क्या है? रिएक्ट भी तो एम्बेडेड है. अब मुझे रिएक्ट के कोड में एंटर करना है, राइट? सो पहले मैं वो ब्राउजर से अपने कोड में एंटर करने वाला दरवाजा लेके आया और उसको मैंने रूट बना दिया. किसका? उसको मैंने रूट बनाया अपने रिएक्ट के अंदर घुसने का दरवाजा. तो जब मैंने उसको रूट बनाया तो मैंने इसको एक रूट में स्टोर कर दिया और मैंने क्या बोला? इस वाले रूट में तुम अब रेंडर कर दो. मतलब अब जो भी मैं लिखूंगा इस app.js के अंदर, वो तुम क्या करो? इस रूट एलिमेंट पे अपेंड कर दो. और जब वो रूट एलिमेंट पे अपेंड हो गया, मतलब वो मेरा HTML पे चढ़ गया. जब वो HTML पे चढ़ जाएगा, मतलब मेरा डॉम ट्री क्रिएट हो जाएगा. जब मेरा डॉम ट्री क्रिएट हो जाएगा तो मेरे को चीजें स्क्रीन पे विजिबल हो जाएंगी. This might sound complicated because I'm not teaching you how it is like mapped on this and what all. I'm just telling you कि ऐसा होता है, right? ऐसा होता है. Now, what is this? What is this app.js? This is a component.
ये app.js क्या है? कंपोनेंट है, राइट? लेट मी क्लियर इट एंड लेट मी शो इट टू यू वंस. लेट मी शो इट टू यू. अगर मैं यहाँ पे ऐप लिखता हूँ एंड लेट मी रन द एप्लीकेशन. ओके, सो टिल देन अब हमें क्या करना है? we'll create a new folder. Components. Now all the components which are present, right? All the components which are present. एक मिनट. ये मेरी ऐप रन हो रही है ऑन लोकल होस्ट 3000. मैंने ऐप लिखा हुआ था, तो जब मैंने ऐप लिखा मेरे को ऐप दिखा रहा है इस पे, ठीक है. अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ, सपोज आई एम राइटिंग हेलो, तो इट विल शो मी hello. See, right? It is showing me hello. Now what if I am making another component? I am making a new file by the name maybe intro.jsx, right? And if I do RAFC and press enter, it will give me a boilerplate. So जैसा मैंने बताया, React में each and everything is a component in itself. वो क्या है? एक component है उसमें अपने आप में ही, right? So what I am doing here is, suppose here I am writing div and inside my div I am writing intro, right? And what I am doing, I have to import this component. अब import export का क्या सीन है? Let me tell you that as well. Now just tell me, हम एक फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं? क्या एक फंक्शन को हम ऐसे ही कॉल करते हैं? Yes, we call a function like this only, is it? Yes, sir. Yes. And मैंने क्या बोला अभी कि इंट्रो क्या है? इंट्रो इज अ कंपोनेंट. एंड अर्लियर आई सेड दैट अ कंपोनेंट इज नथिंग बट अ फंक्शन. तो जैसे मैं फंक्शन को कॉल करता हूं, वैसे ही मैंने अपने कंपोनेंट को कॉल कर दिया. जब मैंने इस कंपोनेंट को कॉल किया तो क्या हुआ? सी व्हाट हैपेंस ऑन द ब्राउजर. मुझे इंट्रो दिखने लग गया. यहाँ पे हेलो के नीचे आई एम सीइंग दिस इंट्रो. इज इट? Yes. Likewise, if I make some other component, maybe child.jsx, right? And if I import this child as well over here, and control X. अब मैं इस child को अगर यहाँ पे कॉल कर दूं, तो क्या मुझे child भी दिख जाएगा? Child is also visible. Right? Now, can I say कि इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा, अगर मैं यहाँ पे एक h1 टैग बना के उसके अंदर हेडिंग लिखता हूं, तो वो सारी चीज मुझे यहाँ पे दिखेगी. Let me reload the page. See? Getting it? What I am trying to say? Yes, sir. अगर मैं कोई आई कैन से h1 टैग लगाता हूं एक, उसके अंदर मैं आई टैग लगा देता हूं, सपोज, राइट? एंड इफ आई राइट हेलो हियर, लेट मी रीलोड द पेज. सी, am I getting it in italic form? Guys? Yes, sir. Yes, sir. So, कुछ क्लैरिटी हुई. कंपोनेंट क्या होते हैं? कंपोनेंट, व्हाट आर कंपोनेंट्स? कुछ हुई क्लैरिटी? Yes, it's clear, sir. Yeah. So now let's move further. अब I would like to ask you guys, क्या ये HTML है? क्या ये HTML है? सर दिस इज JSX क्योंकि उसमें HTML और जावास्क्रिप्ट दोनों यूज हुई है. Exactly. This is not HTML. And this
is not HTML. Let me prove you. Let me prove you this thing, guys. Inline styling देनी आती है सबको? Okay, wait, just a minute. मैं काम करता हूँ, पहले मैं HTML में inline styling देता हूँ. Let me give inline styling to this thing. ठीक है, इसके अंदर मैं देता हूँ color red, right, and what else? Maybe background color, it would be yellow, right? क्या ये एक वैलिड इनलाइन स्टाइलिंग है HTML में? यस और नो? यस और नो? Yep, it is a valid, right? Let me copy this and let me paste it over here. Let me paste it over here. क्या चलेगा? देखें. अच्छा, मेरे को वहां से हटाने दो. Let me remove it from here. मेरे को इसको यहां से हटाने दो. Now see. See, is something visible to you? And in console, it is showing me some error. The above error occurred in the div. See, if it would, like, if it was a HTML, then ये चलना चाहिए था ना जनता? This should work, right? Hence, it is not HTML. It is a HTML-like syntax. It is a HTML-like syntax. Never ever in your interviews as well. Don't say that JSX is writing HTML and JS together. No. JSX is not writing HTML and JS together. JSX is writing a HTML-like syntax along with the JS. That is what a JSX is. Getting my point? Guys, clear hai? Yes, sir, it is clear. Yes, sir. चले फिर आगे. हाँ जी सर. Yes, sir. ठीक है. कंपोनेंट समझ में आया? कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट कॉल कैसे होते हैं? आगे समझ में सबको? कोई डाउट? Yes, sir, it's clear. ठीक. So I also said that we can pass some data in the component. Let's see. Rishabh, I'm passing, right? So now एक बात बताओ मेरे को, जब हम किसी कंपोनेंट में कोई आर्ग्यूमेंट पास करते हैं और उससे हमें उस फंक्शन के अंदर, जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं और उसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, एंड इफ वी वांट टू यूज दैट आर्ग्यूमेंट इनसाइड माय फंक्शन, मैं कैसे कर सकता हूं? मैं कैसे करता हूं? अरे बोल दो. मैं नॉर्मल फंक्शन की बात कर रहा हूं, कंपोनेंट की बात नहीं कर रहा हूं. हाँ, by using arguments name. So if I am passing some argument, right? If I am passing some argument while calling a function, and I need to use that particular argument inside my function, do I need to take some parameters over here? लेने पड़ते हैं मुझे? Yes or no? Yes, sir. Yes. Now can I use this name inside here? देखें क्या आउटपुट आएगा. Let's see. Got it? How to pass a data from one component to another component? आया समझ में? कुछ समझ में आया रिएक्ट कैसे काम करती है. सी, ये मैंने ऋषभ कहां दिया था? I gave this ऋषभ over here. कहां पे गया? चाइल्ड में. अबे यार, ऐप में. When I called this function, right? At that time. So, can I give only strings out here? No.
I can pass a complete object. Let me do it. Name, name, which is Rishabh, right? Age, which is like, I'll not tell my age. Okay. Phone number, right? Which is like something something. Okay. Now I am passing this complete object as an argument and I am getting it over here. मैं इसको कहाँ पे यहाँ पे मैं इसको get कर रहा हूँ. So first of all, let me show you what is there. Let me show you this thing. Log. Everyone aware of the log? What is it? What is log? Log पता है? Console log क्या होता है? Yes, sir, पता. Yes, पता है. बढ़िया. Yes, तो पता है. बढ़िया. To print the message, right. To print the message. तो अगर मैं यहाँ पे params print कराऊं, तो am I getting the complete object out here? Yes or no? Yes? अरे बोल दो यार, इतना टाइम मत लगाया करो. Yes, sir. Yes. Now suppose मुझे इस पूरे ऑब्जेक्ट में से अपना नेम प्रिंट कराना है, एज प्रिंट कराना है और फोन नंबर प्रिंट कराना है. तो मैं कैसे कराऊंगा? सी, I'll take a p tag, name is, right? So I would be like params dot name. Again a p type, age is, and I would write params dot age. Let's save and let's see it. Am I getting my data? Yes or no? Yes. Now let me show you the advantage of using the components. They are so beautiful. They are so beautiful. See, हो सकता है मेरे पास 10 बच्चे हैं जिनका डेटा मेरे को प्रिंट कराना है. How will I do it? I'll call it multiple times. Now with some different name, ABC, whose age is 1, 2, right? Let us call it one more time. Maybe this time its name is GFG, right? Whose age is, I can say, 9. Let's see the output. Am I getting the whole thing? Yes? Yes? Guys. Yes, sir. Yes, So, sir. so I told you that function, why we make functions? To get the reusability of the code. Yes, I have written this code one time, I have written the logic one time, and I am reusing it as many times as I want with the different data. Got my point? Yes, And sir. Got it, sir. what we just did, what is this concept called? The passing data from one component to another component. We are passing the data, right, when we are calling this thing. So what is this data called? Anybody? What is this data called? What is the name of this data? These are props. Props. किसी ने सुना है? Props? Yes, sir. Yes. So these are props. Congratulations, we have studied what a props is and how to pass data using props. हो गया एक concept. खत्म. So, I told you one more line about the components. Components are those who has all the functionality that a function has plus some additional functionalities. तो एक फंक्शन की जितनी भी फंक्शनैलिटीज होती है वो तो हमने देख ली कि हम क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, हमें चेंजेस करने होंगे तो हम बस एक जगह चेंज करेंगे, वो ऑटोमेटिक हर जगह रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, राइट. अब सपोज करो, चलो चेंजेस करके दिखाते हैं. अभी तक यहाँ पे क्या आ रहा है? अभी तक यहाँ पे हेडिंग आ रहा है. अब सपोज करो मैंने इस हेडिंग को चेंज करना है. क्या पे हेडिंग नहीं चाहिए मेरे को, यहाँ पे मेरे को चाहिए COMPONENT कंपोनेंट चाहिए. तो मैंने बस एक जगह पे चेंज किया, राइट. मैंने बस एक जगह पे चेंज किया एंड दिस चेंज इज रिफ्लेक्टेड थ्रू आउट माई एप्लीकेशन. See, that's how beautiful the component is.
So, हमने ये तो देख लिया कि एक कंपोनेंट वो हर काम कर सकता है जो एक फंक्शन कर सकता है. It can take in some parameters. It can be called. It can be reused. It can be like short our, like it can be ease our work, right? कर सकता है. But also I said component had some additional powers. Now let us discuss those additional powers. Let us discuss those additional powers. अच्छा, one more thing that I would like to ask you guys. यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसिस क्यों लगाया है? Can't I use it like directly like this? क्या मैं डायरेक्टली ऐसे यूज नहीं कर सकता इसको? Why I need to put these curly braces out here? क्यों? ठीक है. ये कोड किसका है? तो स्कोप डिफाइन करता है. स्कोप डिफाइन करता है. नो, पार्शियली करेक्ट. इफ आई टॉक अबाउट लाइन नंबर 10, तो ये किस लैंग्वेज का, मतलब ये क्या मैं ये कह सकता हूँ ये जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है मैंने? यस यस. या फिर सपोज करो, चलो ठीक है, अभी के लिए मैं ऐसे करता हूँ. लॉग करेंगे हेलो. तो लाइन नंबर 10 इज जावास्क्रिप्ट कोड, यस और नो? सो whenever we are writing JSX, जब भी हम JSX लिखते हैं, what is JSX? What is JSX guys? What is JSX? ये बताया मैंने. When code is written in HTML syntax with JavaScript. Yeah, when we write any code containing HTML like syntax as well as the JavaScript, it combines to make a JSX. So अब जब हम JSX लिखते हैं तो मैंने क्या बोला, HTML like syntax और JavaScript. तो हमने HTML like syntax तो लिख दिया, बट जब हमें JavaScript लिखना होता है along with this HTML like syntax, it's mandatory to put these curly braces. You can only write your JavaScript code within this curly braces. Otherwise, you cannot. अगर मैं curly braces हटा दूं, तो ये console log will be it will be treated as a that thing, HTML वाला part. See? Let me reload the page. Let me show you guys. ये देखो, hello के आगे console log सीधा सीधा आ गया. So now it is treating it as a HTML like syntax. To convert it into, to tell the file, to tell the browser that sir, ये मैंने एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है, मुझे ये कर्ली ब्रेसेस में डालना पड़ेगा. क्या इतनी चीज क्लियर है? यस यस सर. यस. चलो आगे बढ़ते हैं. अब मैंने बोला था कि component has some additional powers as well. So this was the one way of calling a component. We have another way of calling a component, just like my HTML tags. Just like my HTML tags. So this is the syntax of a HTML tag. अगर मैं इस syntax में कोई component का नाम दे दूं, so this is also a calling of a component. See, now it will show me some errors because I have not passed the props in it. So let me comment this first. Let me show you. Right now it is fine. See, components get called. Right now, earlier we passed prop, right, like this. We passed props like this. We passed the data like this. तो क्या इसमें भी मैं डेटा को पास कर सकता हूं इसी तरीके से? Yes or no? Yes. How we can do it, Rocky? How we can do it? Any idea how we can do it? We will just give it as an attribute. Attribute पता है सबको what an attribute is? Blind खेल रहे हो हैं? Blind मत खेलो यार. नहीं क्या हुआ अब? अच्छा, इसको ऐसे कर देते हैं, बाद में we will deal with it. हाँ, so see,
जैसे हम एक नॉर्मल HTML टैग में we pass attributes, we give attributes, likewise we give like this. Now, anyone who could tell me, क्या मैं सिर्फ स्ट्रिंग पास कर सकता हूं? इसमें एरर क्यों आ रहा है? Anyone? मैंने अभी इसका आंसर बताया, थोड़ा सा सोचो, मैंने अभी इसका आंसर बताया है. सी, अब एरर नहीं आ रहा. Now can anybody explain it why that error was coming? See, now it is gone. Anyone who could now figure it out वो error क्यों आ रहा होगा and अब क्यों हट गया? कोई figure out कर सकता है? हम डायरेक्ट पैरामीटर्स पास नहीं कर सकते होंगे, हम JSX की फॉर्म में ही पास कर सकते हैं. सी, एग्जैक्टली, काफी हद तक सही है. हम अब जब इसको इंट्रोडक्शन को पास कर रहे हैं, सो दिस 9 इज आई कैन से इज एक्टिंग एज अ वेरिएबल काइंड ऑफ थिंग, राइट? एंड दिस HTML लाइक सिंटैक्स डोंट नो भाई ये क्या है, बट यस, जावास्क्रिप्ट नो दैट दिस इज अ न्यूमेरिक वैल्यू व्हिच स्टैंड्स फॉर 9. तो हमें वी नीड टू पास इट एज अ जावास्क्रिप्ट कोड. समझे? And now if I like use it, now if I uncomment this code out here and let me remove this, Control S, let's save it and let's see. Getting it? Right. Now again I can reuse the code, I can call it as many times as I want. See, हो गया, खत्म, sorted. काम आसान हुआ हमारा. Yes, sir. अब समझ में आया why React is our work. React हमारा काम आसान कैसे करती है. Got it? So Got it, sir. we have just now studied what are components, how React is fast, how React is our work, right? And props as well. हमने props भी पढ़ लिए हैं. Props clear है सबको? Props क्या होते हैं, guys? Like it's a vague idea. I know it was a very vague idea, but yes, I get कुछ idea लगा होगा React के बारे में, कैसे काम करती है behind the scenes, right? Anybody any doubt? Anybody any doubt till here? Anybody any doubt till here? Yes or no? Hurry up in the chat. Yaar, I have like 26 people. At least I should get 20 replies, excluding me and like all those. तो यार एक ही बच्चा है क्या बस? कुशाग्र बस, नो अदर स्टूडेंट. Guys, feel free to interact, please. मजा नहीं आता सेशन में गाइस. क्यों नहीं इंटरेक्ट करते हो? नहीं आता मजा. ना तुम्हें मजा आएगा, ना सामने जो सेशन ले रहे हैं उसको मजा आएगा. इंटरेक्शन होगा तभी मजा आएगा. लाइक ऐसे मैं बोल के चला जाऊंगा, it would be like waste of my time and your time as well. If I am here, please utilize me as much as you can. Ask as much as you can, right? Okay, so now let's see one more thing. चले एडवांस एक लेवल. चलो ठीक है. Hooks पढ़े? Hooks. Anyone who is familiar of React would be aware of hooks. Now let me first tell you what was the problem with JavaScript and how we have solved. अच्छा, first of all, इससे पहले, what is a single page application? Anyone who could tell me what's a single page application? It's like कि जब एक यूजर एक वेबसाइट के लिए एक्सेस करता है तो सर्वर से वो पूरी वेबसाइट का कोड एक ही बार में HTML CSS JS जो भी बैकग्राउंड में थी सब एक साथ उसकी पीसी पे आती है एंड अकॉर्डिंग टू द यूज वो रीलोड होती रहती है. मतलब कंटेंट चेंज होता रहता है, पेज वही रहता है, मतलब बार बार आपकी वेबसाइट रीलोड नहीं करेगी. हाँ, पेज रीलोड हमारी वेबसाइट अगेन एंड अगेन रीलोड नहीं करती. जब मैं एक पेज से दूसरे पेज पे विजिट करता हूँ
तो my website will not get reload. This is what a single page application means. बट जब हम नॉर्मल HTML CSS जावास्क्रिप्ट से कोड लिखते हैं, तो जब मैं एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करता हूं, तो क्या मेरा पेज रीलोड होता है हर बार? यस और नो? यस, होता है. नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ प्रॉब्लम टू यू गाइस. सपोज मेरे पास 5 पेज है, ठीक है? आई हैव 5 पेज. पहले पेज में मुझे बंदे का नाम भरवाना है, दूसरे पेज में एज भरवानी है, तीसरे पेज में फोन नंबर भरवाना है, चौथे पेज में मैरिटल स्टेटस भेजना है, और पांचवें पेज में पेज को मेरे को सबमिट करना है फॉर्म को. कैसे करूंगा मैं? बाय यूजिंग HTML CSS इन जावास्क्रिप्ट. हाउ विल आई डू इट? पेजेस को राउट करके. हाँ, राउट तो करेंगे, फाइन, मान ली तुम्हारी बात. बट सपोज करो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है? आई हैव मेड एन ऑब्जेक्ट फॉर योर रेफरेंस. लेट मी मेक एन ऑब्जेक्ट एज वेल ओवर हियर. नेम अभी खाली है, बट मुझे कुछ भरवाना है इसमें, ठीक है? एज जो है वो अभी खाली है, बट आई नीड टू गेट समथिंग इन माय एज, राइट? एंड नेम, एज, फोन नंबर. फोन नंबर अभी खाली है, बट मुझे भरवाना है. सपोज ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? दिस इज माय ऑब्जेक्ट, एंड मुझे इस ऑब्जेक्ट को 3 अलग अलग पेज में भरवाना है. पहले पेज में मेरे को नेम भरवाना है, दूसरे पेज में एज भरवाना है, और तीसरे पेज में फोन नंबर भरवाना है. एंड ऑन द फोर्थ पेज आई वांट टू सबमिट दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. तो अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूं, तो सपोज करो मैंने एक पेज में इस ऑब्जेक्ट में नाम भरवा लिया. जब मैं एक पेज से दूसरे पेज पे जाऊंगा, तो मेरा पेज रीलोड होगा. यस, होगा. जब पेज रीलोड होगा, तो क्या इस वेरिएबल का डेटा सेव रहेगा? नहीं. There comes React into picture. Why React is there? React is to manage the state. State management के लिए React is there. ठीक है? To manage our states. Now, what is state management? Anyone who could tell me what is state management? मतलब जो भी हमने डेटा या फिर जो भी एक्टिविटी हमने पर्टिकुलर पेज पे कर रखी है, वो एक स्टेट में काउंट होगी. फिर जब भी हमारा नया एक्शन होगा, वो अलग स्टेट होगा. तो प्रीवियस स्टेट को याद रखना, ताकि हमको वो डेटा बार बार फिल ना करना पड़े. I can say it like that. So basically, to persist our data, हमारे डेटा को सेव रख के एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए we use the state management वाली चीज, right? And React is there to manage our states, right? अब स्टेट मैनेजमेंट भी अलग अलग जगह पे हो सकती है, जैसे कि विद इन अ पेज, या फिर मल्टीपल पेजेस में भी, राइट? हो सकता है मेरे को किसी एक पेज में ही कोई डेटा परसिस्टेंट रखना हो सकता है मेरे को किसी दूसरे पेज में कोई डेटा परसिस्टेंट रखना हो, राइट? सो लेट अस फर्स्ट सी स्टेट मैनेजमेंट. यूज स्टेट पढ़ते हैं. यूज स्टेट, राइट? व्हाट इज यूज स्टेट? लेट अस सी दैट. न्यू फाइल, यूज. चलो एक काम करते हैं, लेट अस मेक अ काउंटर. लेट्स मेक अ काउंटर एप्लीकेशन, राइट? काउंटर बनाते हैं. Okay, and in my app.js, let me call that counter. Okay. Let us see. Come on. Done. So, for counter, what I need? मुझे एक चाहिए क्या? इनपुट बटन. क्या, चलो इनपुट नहीं है, p टैग लेते हैं. उसके ऊपर आई नीड अ बटन जिससे मेरे को माइनस करना है. उसके बगल में आई नीड अ बटन जिसमें मेरे को प्लस करना है. एंड इंस्टेड ऑफ p टैग आई विल टेक इट स्पैन. ठीक है, अभी मैं स्पैन में दे रहा हूं 1.
ओके, थोड़ा सा कुछ लगा देते हैं इसमें, एंड परसेंट NDSP, कंट्रोल C, fine. Now what I want, when I click on this plus button, its value get increase, and when I click on this negative button, its value get decrease. Any idea how we can do it? So just tell me, क्या मुझे इसमें एक वेरिएबल की स्टेट को प्रिजर्व करना पड़ेगा कि उसकी करंट वैल्यू क्या है? यस, राइट, एंड ईच एंड एवरी टाइम मुझे उसकी करंट वैल्यू को इंक्रीज करना है और मुझे उसकी करंट वैल्यू को डिक्रीज करना है. So for this we have a functionality called use state. Right, we have a functionality called use, अरे यार कहाँ जा रहा है? Control Y, come on man. We have this use state. Let me import it as well. We have to import it from the React. अब use state क्या है? use state is nothing but जैसे हम variables लेते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में, yes, जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल्स में काम करते हैं. Now when it comes to React, वेरिएबल्स पे काम नहीं करते, हम स्टेट्स पे काम करते हैं. Now what is this state? ये क्या कर रही है, क्या फायदा है इस पे काम करने का? तो इस पे काम करने का हमारे पास ये फायदा होता है, इसमें इस use state consist of a variable as well as a function. And this use state itself is a function which popularly known as hook. ये क्या है? hook है हमारा. ठीक है, अब बात करते हैं ये वेरिएबल क्या है, इस फंक्शन का क्या रोल है, व्हाट इज दिस इनिशियल स्टेट. सी, तो यहां पे मैं जो भी दूंगा, सपोज करो मैंने ऋषभ दिया, राइट, अगर मैं यहां पे जो भी दूंगा, दैट थिंग विल गेट स्टोर्ड इन माय वेरिएबल. अगर मैं यहां पे स्टेट प्रिंट कराऊं तो मेरे पास आउटपुट आएगा ऋषभ. लेट अस सी नाउ. Reload the page. See, am I getting Rishabh? Right? अब जब मैंने यहां पे एक वेरिएबल बनाया, हो सकता है ना, देयर माइट बी अ चांस, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आई नीड टू अपडेट दिस वेरिएबल ऑन क्लिक ऑफ अ बटन. हो सकता है? यस और नो? यस सर. यस. यस. सो वहां पे काम आता है इस सेट स्टेट फंक्शन का. अब ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी वैल्यूज, whatever values I pass in as an argument in this function, it will update the variable with that value. Let us see. Suppose मैंने इसकी इनिशियल वैल्यू दी है 0, राइट, एंड इंस्टेड ऑफ 1 I am writing here state. तो अब बताओ यहां पे स्टेट लिखने से क्या होगा? What will happen if I wrote state here? अरे बोलो. वहाँ स्टेट में जो वेरिएबल होगा वो यूज होगा. हाँ, तो अभी स्टेट, अभी यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा स्क्रीन पे? What will be the output on the screen? आई थिंक 0. Exactly. See, right? अब मैं क्या करूं? जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगा, I will what I have to do, set state and state -1, राइट? क्या ये सही है? एंड जब भी मैं प्लस बटन पे क्लिक करूं, स्टेट +1, क्या ये सही है? यस सर.
Let us see. Let us reload the page. हो रहा है? Yes, sir. Getting? Yes, sir. समझ में आया? Now you guys will tell me. You guys will tell me. मुझे क्या करना है? I have to make a button, and on click of a button, I want to decrease it by -5. How will I do it? Excuse me, sir. हाँ जी. So I have a doubt कि like अगर ये जो हमारा यूज स्टेट है इसको हम कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं फॉर लूप से. लाइक फॉर लूप में हम बाकी जो लैंग्वेजेस है उसमें क्या करते हैं कि अगर हमें डिक्रीज करना है तो आई माइनस माइनस कर देंगे और नहीं. अगर इंक्रीज करना है तो प्लस प्लस. तो नहीं. कहीं ना कहीं नहीं. नहीं. For loop is totally a different concept and use state is a different concept. यहाँ पे हो क्या रहा है? use state कि अगर मैं इंटरनल फंक्शनैलिटी की बात करूं तो यहाँ पे each and everything is related to your DOM tree. use state का सिर्फ इतना सा काम है, वो ये देखता है कि क्या मेरी इस वेरिएबल की वैल्यू अपडेट हुई है या नहीं हुई. उसके पास हमने इनिशियल वैल्यू दे रखी है. अब उसको तो पता है कि मेरी इनिशियल वैल्यू क्या है, राइट? अब जैसे ही इस स्टेट की, इस वेरिएबल की वैल्यू अपडेट होगी, यूज स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी सी है कि वो अपना डॉम ट्री को अपडेट कर देगा, बस. और कुछ मतलब नहीं है यूज स्टेट का. बाकी सारा खेल इन दोनों का आपस का खेल है. अब इसमें क्या होता है, स्टेट की इनिशियल वैल्यू तो हमने सेट कर दी, बट मुझे क्या करना है, जब मैं बटन पे क्लिक करूं तो मुझे स्टेट की वैल्यू बढ़ानी है. तो अब स्टेट की इनिशियल वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? 0 आएगी. When I clicked on the button, मैंने क्या किया, स्टेट को सेट कर दिया 0 + 1. तो अब स्टेट की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई. क्या मेरी स्टेट की वैल्यू चेंज हुई है? यस सर. यस. अब यूज स्टेट क्या करेगा? यूज स्टेट देखेगा कि यार स्टेट की वैल्यू चेंज हुई है, अब मेरा काम आ गया. अब मेरा काम क्या है? मेरा काम है डॉम ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना. तो जब पूरा डॉम ट्री रिकंस्ट्रक्ट होता है, एंड अगेन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल डॉम व्हिच आई एम नॉट कवरिंग राइट नाउ, वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, आई विल कवर इट लेटर ऑन, मे बी सम टाइम. तो अब क्या होगा, अभी के लिए इतना समझ लो. यूज स्टेट क्या करेगा, जैसे ही उसने देखा कि मेरी वेरिएबल की वैल्यू चेंज हुई, वो डॉम ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करेगा. अब जब उसने डॉम ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया, तभी तो जाके मेरा यहाँ पे 1 विजिबल हुआ मेरे को. अदरवाइज क्या मेरे को यहाँ पे 1 विजिबल होता कभी, अगर मेरा डॉम ट्री रिकंस्ट्रक्ट नहीं हुआ होता तो? नो सर. नहीं, right? So this is because of a DOM tree, right? The representation, the reconstruction, the reconciliation of DOM tree, which is showing me 1, 2, 3 over here, and all thanks goes to this use state who is responsible to reconciliate my DOM tree. Okay, got it, sir. Got it? Guys, come on, hurry up. Just tell me if I want, on a click of a button, I want it to get, like, I want it to add 5. I want add 5. How will I do it? State +5. Exactly. Exactly. I'll just copy this. I'll paste it. And state +5. Done. हो गया. बन की counter application. See? यहाँ पे decrease हो रहा है. +1 हो रहा है, +5 हो रहा है. सॉर्टेड. बन गई काउंटर एप्लीकेशन. हो गया एक इंटरव्यू क्वेश्चन तैयार. कोई डाउट यहां तक किसी को? No, sir. No, sir. Okay. So this was persisting the data within a component, within a file, right? Okay, we have half an hour. Should I tell you how to keep the data persistent in multiple files? Yes? Yes, sir. Sure. ठीक है. Anyone who is aware of use context, again a hook, use context? No, sir. नहीं. ठीक है. So what does use context hook do basically? Just like use state is there
to keep data within single component. Use context is there to persist our data in multiple components. How will it, like, how it do? How it do? How it, like, does it? चलो देखते हैं. Okay, let me delete this. Maybe I don't need it. हटाओ इसको. app.js को भी, let me clean this app.js and let me make another folder. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी वाला कंसेप्ट है ये यूज कॉन्टेक्ट का, बट ध्यान से समझोगे तो हो जाएगा. child.jsx. child1.jsx. In my app.js I am doing nothing but, अच्छा इसको याद रखना, ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ जो तुमसे पूछी थी प्रॉब्लम, राइट. सो यहाँ पे आई एम इंपोर्टिंग माय child.jsx, right, and I am calling it. इसमें कोई डाउट कॉलिंग में? I can call it like this. क्या हो रहा है यार आज में? Likewise, I can call child2 as well, and let me import child2. child2 child कहाँ है? अच्छा child1 है, not child. ठीक है, तो यहाँ पे child1. Reload the page. child is there, child1 is there. Fine. So just like use state, there is another hook which is my use context. Now, before using a context, we have to create a context. Before using a context, we have to create a context. So I will create a context. First of all, we need to import it. So I will import the create context from React, and then what I will do, to create a context, I need a const variable, maybe so global data. And this is syntax, guys. ये syntax है, तो अगर इसमें कुछ दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं है. It's just to I can say to, you can memorize it, right? You can just memorize it. हमने क्या किया, एक ग्लोबल डेटा नाम का कोई वेरिएबल बनाया जिसमें मुझे कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना है. अब कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करने का क्या मतलब है, ये वेरिएबल क्यों बनाया मैंने, राइट? ये वेरिएबल इसलिए बनाया, अब दो चीजें होती हैं. When you used to manage the data between multiple files in a React application, we basically have two alternatives. The first one is your create context or use context, right? Or context API, जो इसका अदर नाम, दूसरा नाम है. And the second one is your Redux. Okay. Now, advantage of context API over Redux is context API हम एक बहुत बड़े एप्लीकेशन के छोटे से पार्ट में यूज कर सकते हैं. But when it comes to Redux, our complete application needs to be in Redux. So this is the advantage of context API, कि हम एक छोटे से पार्ट में अपनी एप्लीकेशन के context API को लगा सकते हैं. वहीं पे मुझे काम आता है इस वाले वेरिएबल का जो मैंने बनाया. अब इस वेरिएबल का काम क्या है? सी, जिस भी एप्लीकेशन में, जिस भी जगह पे मुझे कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करना है इन माय एप्लीकेशन, मुझे वो सारी चीजें रैप करनी पड़ती है इस टाइप की चीज में. नाउ दिस ग्लोबल डेटा इज दिस वेरिएबल, सो वी हैव टू टेल दैट 1 2 3, मतलब चाइल्ड में, child1 में, एज वेल एज चाइल्ड के अंदर जो सब चाइल्ड होंगे, child1 के अंदर जो सब चाइल्ड होंगे, उन सारी चीजों में आई कैन use this global data.
I need to wrap all those elements, all those components, right, which I want to use, which I want my global data to get into it. I need to wrap those elements in this wrapper. Now suppose anyone who can tell me, अगर मेरे को child 1 में कॉन्टेक्स्ट नहीं यूज करना, मुझे सिर्फ चाइल्ड में कॉन्टेक्स्ट यूज करना है, तब मैं क्या करता? बता दो यार। अरे नहीं आया समझ में? मुझे चाइल्ड और चाइल्ड 1 दोनों में इस ग्लोबल डेटा का यूज नहीं करना, राइट? एंड व्हाट इज दिस ग्लोबल डेटा? दिस इज दिस ग्लोबल डेटा, कंट्रोल ये ग्लोबल डेटा है। मुझे इस डेटा का यूज सिर्फ और सिर्फ मेरे चाइल्ड में करना है एंड नॉट इन चाइल्ड 1। हाउ कैन आई अचीव इट? चाइल्ड 1 को वहां से बाहर निकाल देते हैं ना। एग्जैक्टली। तो मैं क्या करूंगा, ये रैपर जो है इसको मैं सिर्फ चाइल्ड पे लगाऊंगा, तो मेरा चाइल्ड और चाइल्ड के अंदर जितने भी सब चाइल्ड होंगे उसमें ये सारा का सारा डेटा चला जाएगा। क्या कोई दिक्कत? नो सर। यहां तक क्लियर है चीजें? हाँ जी सर। डन? श्योर एवरीवन? Yes, sir, clear. बाकी जनता भी है मेरे पास। बाकी जनता कहाँ हो यार? मेरे पास 2 बच्चे नहीं है बस, आई हैव लॉट मोर स्टूडेंट्स। यस सर। यस, डन है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट मी मेक अ स्टेट। STAT, use state, and I am declaring a use state over here. Const in which I am declaring this data. अभी के लिए मैं इसको यहां से हटाता हूं and I will declare it here. अब तो ये स्टेट है, I will pass this state over here. इसकी वैल्यू पे, and again this is a syntax, मैं ये स्टेट पास कर दूंगा in my child, right? Now open the child component. Let me get something here. Okay, first of all, अब मुझे चाइल्ड कंपोनेंट में क्या करना है? उस कॉन्टेक्स्ट जो मैंने बनाया था मुझे उसको यूज करना है। यस यस सर। यस। सो यहां पे मैं क्या इंपोर्ट करूंगा? हियर आई विल इंपोर्ट यूज कॉन्टेक्स्ट। हियर आई विल इंपोर्ट द यूज कॉन्टेक्स्ट। वहां पे मैंने क्या किया था? क्रिएट कॉन्टेक्स्ट किया था। क्यों? क्योंकि यहां मैंने अपना कॉन्टेक्स्ट को बनाया था, राइट? मैंने अपने कॉन्टेक्स्ट को यहां पे बनाया था। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? यहां पे मैंने जो कॉन्टेक्स्ट बनाया था मुझे उसको यहां पे यूज करना है। दैट्स व्हाई हियर आई एम यूजिंग माय यूज कॉन्टेक्स्ट। अब मुझे कौन सा कॉन्टेक्स्ट यूज करना है? मुझे ये ग्लोबल डेटा वाला कॉन्टेक्स्ट यूज करना है, राइट? तो इसको मेरे को यहां से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा एंड यहां पे मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ग्लोबल डेटा को इंपोर्ट किया और मुझे ये वाला कॉन्टेक्स्ट यूज करना है तो मैं इसको यहां दे दूंगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं इसको ध्यान से समझना है। इस चीज को थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? यहां पे हमने क्या किया? क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट किया रिएक्ट से। क्यों? क्योंकि यहां पे मुझे वो ग्लोबल डेटा को क्रिएट करना है जो मैं चाहता हूं मेरे मल्टीपल पेजेस में सेव रहे, राइट? उस डेटा को क्रिएट करना है यहां पे। तो जहां मैं क्रिएट करूंगा वहां पे आई वुड बी क्रिएटिंग अ क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, राइट? और जहां पे मुझे यूज करना है वहां पे मैं यूज कॉन्टेक्स्ट पे इंपोर्ट करूंगा। अब मुझे ब्राउजर को ये तो बताना पड़ेगा ना यार कि यहाँ पे मुझे कौन से वाला कॉन्टेक्स्ट यूज करना है। हो सकता है मैंने बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट बनाए हो, तो मैंने ब्राउजर को बताया कि ग्लोबल डेटा नाम का जो कॉन्टेक्स्ट मैंने क्रिएट किया था
वो वाला कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे मेरे को यूज करना है। क्या इतनी चीज क्लियर है सबको गाइस? इज दिस थिंग क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes. Now suppose in here, let us log certain thing. Let us log this context and see what we are getting in this context. देखें क्या मिलता है. Am I getting my object? Okay, let me for the significance. global global data from child. Now see. See, am I getting my object? Yes or no? बाकी जनता यार और भी हैं, कहाँ हूँ? नहीं आता मजा ऐसे यार सेशन लेने में. इंटरेक्ट कर लो यार थोड़ा सा प्लीज, मेक इट अ बिट इंटरेस्टिंग. यप, ठीक है यार, डन. जिद्दी हो तुम, नहीं मानोगे है ना? ओके, ठीक है. सो लेट अस मेक अ इनपुट टैग हियर. एक इनपुट टैग बनाते हैं, ठीक है, जिस पे ऑन चेंज पे एक फंक्शन कॉल होगा जो कि एक ई टैग, ई को इनपुट लेगा और वो क्या करेगा? कॉन्टेक्स्ट डॉट नेम इज इक्वल्स टू ई डॉट टारगेट डॉट. अच्छा, मैंने वो प्रिंट नहीं कराया. लेट अस अगेन कंसोल लॉग दिस थिंग ओवर देयर. मैं यहाँ कंसोल लॉग था, ऑल शिफ्ट एफ. लेट अस नाउ सी. लेट्स रीलोड द पेज. यहाँ पे मैं देखो क्या मेरे पास डेटा आ गया, राइट? डेटा आया. अब मुझे क्या करना है? एक कंपोनेंट पे मैंने कुछ डेटा को फिल कराया. अब जो ये चाइल्ड वन कंपोनेंट है, अगर मुझे इसमें एक इनपुट टैग क्रिएट करना है, राइट, इसमें मेरे को एक इनपुट टैग क्रिएट करना है एंड यहां पे मुझे उसका कुछ सेट करना है. सपोज करो यहां पे मुझे क्या सेट कराना है? हियर आई वांट टू सेट उसकी एज. उसकी एज मुझे इस कंपोनेंट पे सेट करानी है. तो एनीवन हु विल लाइक टेल मी हाउ वी कैन डू इट? एनीवन प्लीज टेल मी. आई डोंट नो हाउ टू डू इट. एनीवन हु कुड टेल मी? Use state. अरे यार नहीं, यूज स्टेट नहीं, थोड़ा सा और सोचो. मेरा डेटा कहां पड़ा है? नो. मुझे इसी वाला, जो मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट है, इसी वाले ऑब्जेक्ट में नेम तो मैंने चाइल्ड कंपोनेंट पे भरवा लिया, राइट? नेम मैंने चाइल्ड कंपोनेंट पे भरवा लिया. अब उसी ऑब्जेक्ट में मुझे एज भरवानी है, बट वो चाइल्ड वन कंपोनेंट से भरवानी है. कैसे होगा? उसको कंपोनेंट को मतलब जहाँ वो हमने डिफाइन कर रखा है उसको यहाँ कॉल करेंगे हम. क्या क्या लिखूं मैं? इंपोर्ट करेंगे उसको. ठीक है, क्या इंपोर्ट करना है मेरे को? मैं नाम भूल गया. कहाँ? ग्लोबल डेटा. ठीक है, तो चलो ग्लोबल डेटा को मैंने इंपोर्ट किया एंड उसके बाद मुझे उस ग्लोबल डेटा का यूज करना है. तो यूज हम कैसे करते थे? ओके, मैं तुम्हें ये खोल के दे रहा हूं तुम्हारे सामने. इसको देख के मेरे को बता दो. Use context global data. एग्जैक्टली. कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एंड मुझे इसको इंपोर्ट भी कराना है. तो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी.
एंड ऑन चेंज पे मैं क्या करूंगा, कॉन्टेक्स्ट डॉट एज इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट value. वैल्यू. हो गया, डन, सॉर्टेड, राइट. एंड ऑन चेंज, let me log my data from child1 component, and here comes my, come on, context. Okay, and from the child component let me write it name here, और मैं इसको यहाँ से, let us see what we have done till now. Reload the page on the console. यहाँ पे मैं नेम भर रहा हूँ, तो नेम मेरा कौन से वाले कंपोनेंट में था, what it will do here. यार तुम क्या पूछ रहे हो कुमार, कैन यू प्लीज, कुमार शर्मा, कैन यू प्लीज elaborate your query. Okay, so name was in my child component. Yes. Yes, sir. Yes, sir. So मैंने यहाँ से, अच्छा नेम नहीं, let me fill, and age was in my child2 component, right? Yes, sir. So see, क्या मेरा दो अलग अलग कंपोनेंट में डेटा परसिस्ट है. Guys, Yes, sir, है. Yes, sir. It is persisting. राइट. नेम मेरा आया चाइल्ड कंपोनेंट से, एज मेरी आई child1 कंपोनेंट से. So my data is persistent in two different components. Now suppose एक फोन नंबर बचा है, फोन नंबर मेरे को किसी तीसरे कंपोनेंट से भरवाना है. Now anyone who could help me? सेम सा रहेगा सब कुछ, बस हम वो हाँ वाला बताओ ना, तो सेम क्या चलेगा बताओ. इंपोर्ट करेंगे हम पहले ग्लोबल को, फिर यूज करेंगे ग्लोबल को. ग्लोबल डेटा को इंपोर्ट करेंगे, राइट, फिर हम इसको यूज करेंगे. तो मैं यहीं से कर लेता हूँ इस लाइन को, और this line and this line, कंट्रोल सी, child3 में कंट्रोल वी, तो यहाँ से हट जाओ, ऊपर चले जाओ, तुम नीचे आ जाओ, शिफ्ट एफ, यहाँ पे कंट्रोल सी, यहाँ पे आई नीड माई इनपुट Input. on Change. change, right, we will do something, context dot phone number था शायद, I don't know, is equals to e dot Target dot value. right. Let's do this. Let's log what we have to log. Context. Let us save the thing, right? And from child1, let us, चलो इसको कॉपी कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ यहाँ से. Let's control V, and this data is from my child3 data. Let's see now. Phone number ही था ना, I don't know whether it was a, हाँ phone number था. Fine. Let's reload the page. So, अरे अरे अरे, अच्छा मैंने कॉल नहीं किया. Fine, 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 fine. I have not called this child3 over here. मेरे को यहाँ पे भी child3 को import कराना पड़ेगा. Control X, and over here Control V. Done. So name is coming from child1, age is coming from child2, and phone number is coming from child3. Let us see. Rishabh, age is like this, phone number is like, क्या मेरा डेटा persistent है? Yes, sir. And let me make another component. Maybe a submit component, submit.jsx, right? So this is my button, right? This is my button. Right? And इसके
On click पे, right, something will happen. Suppose an alert will generate, and यहाँ पे भी again I need to copy this, control V, you get deleted, you get down, control C, this will print object. So this will print object. ठीक है. So cons dot name, right? चलो ये बताएंगे बस, comma context dot age, comma context dot, let us see now. इसको भी मेरे को कॉल करना पड़ेगा in my app.jsx. So let us call it, submit, control X, अच्छा ग्लोबल डेटा इज नॉट डिफाइंड, मैंने इंपोर्ट नहीं किया ग्लोबल डेटा को, फाइन, कोई इशू नहीं है, लेट्स जस्ट इंपोर्ट दैट एज वेल. ठीक है. So you load the page and Rishabh something submit. अच्छा ऋषभ ही आया, बाकी चीजें नहीं है, कोई बात नहीं, we'll see क्यों नहीं है. तो मतलब समझ में आया चीजें, how it works, how things work, is it clear? सर आई हैव डाउट. हाँ जी. जब हम एक बार आप टर्मिनल पे जा सकते हैं, मतलब ब्राउजर. एक मिनट. चलो ठीक है, इसको बाद में देखते हैं. चलो हाँ, चलो. यहाँ पे जब हम फोन नंबर इंसर्ट कर रहे हैं तो एक एक वेरिएबल पे वो रीलोड कर रहा है. हाँ, तो कौन सी स्टेट रहेगी हमारी? क्योंकि मैंने क्या किया है, देखो जब मैं इस पे जा रहा हूँ तो मैंने ये फंक्शन कॉल किस पे किया है, ऑन चेंज पे. तो ऑन चेंज पे जितनी बार मेरी उस इनपुट की वैल्यू चेंज होगी ना, उतनी बार वो फंक्शन अपडेट होगा. ओके. तो सपोज अगर मैं इसको डिलीट भी करता हूं, देन आल्सो द फंक्शन विल गेट कॉल्ड. व्हाई? बिकॉज कोई ना कोई चेंज अकर हुआ है उसमें, दैट्स व्हाई. ओके सर. थोड़ा आइडिया मिला रिएक्ट कैसे काम करती है? हाँ जी सर. राइट, मतलब अगर आज की सेशन समझ में आया है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज स्टेट, आई कैन से यू दैट 40% ऑफ रिएक्ट हो गई. प्रॉप्स कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज स्टेट covers 40% of your React. ओके सर. राइट, किसी को डाउट है कुछ अभी तक? नो सर. क्लियर है गाइस? नो सर. Anyone having any kind of doubt? समझ आया? हाँ, तो जिसको समझ में आया उसको 40% रिएक्ट हो गया आज. रिएक्ट का करिकुलम चेक कर लेना, हो गया 40%. ठीक है जनता, कोई डाउट है पूछ लो. एनी डाउट रिलेटेड टू इंडस्ट्री, रिलेटेड टू करिकुलम, वेब करिकुलम, कुछ भी डाउट हो पूछ लो. लिंक्डइन करोगे, लिंक्डइन लेके कहाँ से आता है? अरे अच्छा, व्यू प्रोफाइल, ये लो यार, दिस इज माय लिंक्डइन. नो डाउट सर, एवरीथिंग इज क्लियर, फाइन. कुछ भी डाउट्स हैं किसी को तो यू मे आस्क, अदरवाइज वी कैन एंड द सेशन. Let's get this now. Like, पूछ लो यार, कुछ भी डाउट है, like not regarding to this only, regarding to your
whatever it is. No, sir. Sure. Maybe end the session then. Hmm. Okay then. Let's end it, guys. Yeah, sure, sure, sure. Who has it out? Yeah, Ushank, ask me. Uh, can we make website without it? Yeah, of course we can. It's not mandatory. Mic isn't working. You can type in chat, Ushank. No issues. You can type in chat. You can type in chat. It's again. It's not mandatory. We have to make the websites with React only. No, no. Should I go for front end, back end, full stack? Okay, good question. Good question. Nice, 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 nice. It's a very good question, guys. Should I go with this? See, first of all, I am definitely sure that if I ask you the definition for full stack development, you must not be you would not be able to answer me what a full stack developer is. Full stack developer is not only for front end and back end. Full stack developer means you are working as a front end developer, as a back end developer, as a DBA, as a cloud infrastructure manager, as a Android developer, as an iOS developer. You are taking care of each and everything right from scratch. Starting from it starts from the development part. It go through the hosting part, and it ends up as a maintaining the things, right? So that's a full stack developer. Now the point is how like whether to go for a front end or back end. See, it totally depends on one's interest. As a fresher, one thing that I can tell you is basically it doesn't matter whether you are going for a full stack developer or a front end developer or a back end developer or a MERN developer, you would be getting the same salaries as a fresher, right? You would be getting the same salary. Like for MERN stack also, you would be getting like whatever you are getting, and for front end development also, you would be getting whatever you are getting. And when it comes to just to seek a job, अगर तुम्हें एक immediately job चाहिए, React is the best thing. आज की डेट में मार्केट में React की भर भर के जॉब्स पड़ी है यार, भर भर के जॉब्स है React. Like it's like अगर तुम आज React पढ़ लेते हो अच्छे से, if you are ready with the React today, within 1 week you would be having an offer letter. Within 1 week, इतनी डिमांड है React. When it comes to backend, Spring Boot is the only thing जो आजकल मार्केट में बूम पे. फ्रंट एंड में React, बैक एंड में Spring Boot. I have told you both the alternatives. हाँ, but ये है Spring Boot takes a bit time because before Spring Boot you need to know what is Java, the core concepts of Java, right? And then you need to study the Spring Boot. So I can say that one or 1.5 months it would take to study Java. Then 2 months it would take to study the Spring Boot basics. Then to master it again 2 months. So it's a 5-month procedure if we talk about Spring Boot. But if we talk about React, 1.5 months to do the basic, at max 2.5 months to like make it industry ready. At max 2.5 months, React will take. So if you want an immediate job and a decent level of salary, I can say decent level, then of course React. And this might be a biased answer because I myself is a front-end developer, and this might be a biased answer. But yeah, the truth is, if you want to go with backend, go for Spring Boot.
highly in demand. For front end, go with React, highly in demand. This is unbiased. Okay. Any other doubts? Any other questions? Guys, any other doubts? No? No, sir. Okay, then Utkarsh, you may. That's all. Yep. Yep. So, okay, guys. So, bye bye. Bye, everyone. Thank you, sir. Yeah. Now, I would like to tell you that tomorrow is our project day and we will be winding up with the development week. You all will be handed over with the project, which will be hosted by Mr. Tushar Patodia, 7 p.m. onwards. Thank you for all joining this session, this live. You may all leave now. I officially call off the meeting. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I've weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Over the edge, feel
feel like I'm floating through the air.